architecture as well. And जैसे most of us are architects or designers, or some of us are also interior designers. So this is very relevant to all of us. I'm going to show you how. So these were few of the early renders which were created using AI, जिसमें आप कुछ भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट ऐड करो, और जो भी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट आप जो ऐड करते हो उसके थ्रू आपको एक इमेज जनरेट होता है. तो ये जो इमेज जनरेट होता है इसमें देयर इज नो मैनुअल लेबर रिक्वायर्ड, एंड इट इज वेरी स्मार्ट द वे इट डज इट. तो हमारे आर्किटेक्चर में ये कैसे रिलेवेंट है, तो ये इसमें आप जो भी रेंडर्स देख रहे हो ये हमने टोटली एआई के थ्रू बनाए. तो आज के तारीख में अगर हमें ये टेक्नोलॉजीज नहीं आते हैं तो वी ऑलरेडी आउटडेटेड. तो जैसे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो जो रेंडर्स क्रिएट हुए हैं वो एआई के थ्रू हुए. ऑन द राइट हैंड साइड आप देख सकते हो जो बॉटम के दोनों इमेजेस है, दे डोंट एग्जिस्ट, वो रियल में बिल्डिंग्स नहीं है. जस्ट टॉप में हमने एक स्केच डाला था जो कैड का है, एंड बॉटम एआई ने वो स्केच को समझ के उसको विजुअलाइज करके हमें एक इमेज बना के दिया है. राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं एक इंटरनेट जनरेटेड रेंडर है, इंटरनेट नहीं अपना सॉफ्टवेयर जनरेटेड रेंडर है, जो अभी भी काफ़ी मेड अप लगता है. एंड बॉटम में वही अगर हम एआई का रेंडर देखें या उसके ऑल्टरनेटिव्स देखें या उसके फॉर्म्स देखें, तो एआई इजीली उसको समझ के आपको ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं. हमारे पास और कुछ एग्जांपल्स एआई के जो हमने यूज किए हुए हैं. ऑन द बॉटम एंड साइड दोनों जो रेंडर्स देख रहे हो आप एंटायरली क्रिएटेड बाय एआई विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ब्रीफ, द कॉन्टेक्स्ट, द पैरामीटर्स वी गिव, एंड ओवरऑल सेट एंड सेटिंग दैट वी डिफाइन. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया एआई. इसमें it doesn't have to be a predefined image, it can also be something from scratch. जैसे कि ये हमारे स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं जिसमें उन्होंने entirely एक कॉन्टेक्स्ट फ्रेमवर्क डिजाइन करके उसके थ्रू थीम बेस्ड डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन उन्होंने फ्रेमवर्क बनवाया था. And this is very modern also, and it can be very traditional also. You whatever form of design that you want to take out of it, you can take. There are limitless possibilities. This is just the beginning of what AI is. So I'd like Nidhi ma'am to continue with the Nidhi ma'am. Sure. Uh, I'll What is just digital parametrics? yes. So what we have been talking about, जो भी सर ने बताया, AI generated inputs है, and AI generated inputs को हम parametric design से connect करते हैं. So what we are offering or what we are saying our course is digital parametrics. It's going to be a course where we are going to be talking about computational design theories. We are going to be talking about advanced software like Rhino and Grasshopper. And along with that, we are going to be talking about how to fabricate all the designs. जो करने के लिए हम additive and subtractive methods use कर सकते हैं. Shan sir, you have to stop sharing such that I can continue sharing this. Okay, thank you. कंटेम्पररी टाइम्स जो भी एडवांसमेंट हम देख रहे हैं in terms of building technologies, in terms of fabrication technologies, all of them are driven as a base of two key softwares, Rhino and Grasshopper. So why Rhino and Grasshopper? I'll tell you one very important reason for this. First, with the advent of CAD softwares, जैसे हमारे पास AutoCAD आया, SketchUp आया, या फिर 3ds Max है for that reason, all of this is kind of 2D based software. Also, they allow us to 3D modeling. But जब भी it will come a time that we have to iterate different processes, we have to iterate different options, or we have to control our design in any way possible. It won't allow us. हमने एक बार डिजाइन बना दिया, हमने एक बार 3D मॉडल बना दिया, it is going to remain static as it is without any changes. अगर हमें उसमें changes करने हैं, it is going to take hours of different modeling altogether to come with different solutions. But over here, using Rhino and Grasshopper, it allows us to do iterative modeling. Iterative modeling में क्या होता है, मेरा एक बार modeling हो गया, एक बार मैंने वो logical
scripting कर दिया grasshopper पे, there I have to just change certain parameters, I have to just change certain numbers, और हमारा total overall design है वो वहां पे change हो जाए. जिससे फायदा क्या होता है? The biggest benefit of this thing is my efficiency as a designer increases. My efficiency towards giving more and more options to the clients or for any project that I'm doing increases. That is the most important thing I believe Rhino and Grasshopper with the theories of parametric design can provide us. So taking this further, how we can create then these things. ये बात हमें डिजाइनिंग में समझ आ गई, हमने सॉफ्टवेयर चलाना सीख लिया, फिर उसे बनाना कैसे है, उसको करेक्ट टेक्नोलॉजीज यूज करके रियलाइज कैसे करना है प्रोजेक्ट. सो दैट इज व्हाई थ्री बेसिक टेक्नोलॉजीज, लेजर कटिंग, 3D प्रिंटिंग एंड CNC कटिंग, ये तीनों टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम किसी भी स्केल में, वो एक छोटा प्रोडक्ट स्केल से लेके बड़ा आर्किटेक्चर पेविलियन स्केल तक पूरे पैनोरामा में we can create almost everything. There are no limits to what we can first design through this software and then using this technology creating it. So these are the few slides from our previous classes where you can see, you might have seen this kind of facades, right? You might have seen this kind of partitions getting created. तो ये मेरा iterations, let's say मैं CAD में डिजाइन कर रही हूँ, but वो एक बार मुझे उसे चेंज करना है, तो कैसे कर सकते हैं? These are the example of it. You can see यहाँ पर हमने फसाड क्रिएशंस की एक्सरसाइज की है, तो हर एक फसाड डिफरेंट है, और मुझे ये फसाड्स के अगर 10 आइटरेशंस चाहिए तो आई कैन गिव यू दैट इन विद इन 2 minutes. Also if you are creating certain kind of a pavilion, तो उसके pavilion की डिजाइन से लेके उसके अगर मुझे फाइल्स को CNC करवाना है या लेजर कट करवाना है, तो उसके फाइनल फाइल तक सब कुछ मैं ऑटोमेट कर सकती हूँ यूजिंग ग्रासहोपर. Even if you're trying to generate some kind of a lamp over here, so I have to just change any parameters. I'll just give you an example. We have certain products over here of the very same thing. See, this is the kind of a lamp one want to create. So using the same scripting which is there, you can see on the right, one has generated the lamp on the right, but this is the same exercise but a different form. वैसे ही एक कलर आउटपुट ये भी है. इसे जनरेट करने का रीजन ये था स्क्रिप्ट का कि मुझे ऐसे अगर लेट्स से 100 आइटरेशंस चाहिए, 100 फॉर्म्स चाहिए, तो मैंने एक बार स्क्रिप्टिंग कर दिया, उसके बाद मुझे ऐसे 100 या थाउजेंड्स में इनफैक्ट आइटरेशंस चाहिए, मैं कर सकती, बिकॉज आई हैव टू जस्ट चेंज माय पैरामीटर्स. Similarly, if you're trying to create some complex kind of a pavilion, अगर उसका कुछ फाइल जनरेट करना है या फिर मुझे entirely different form create करना है, so it will aid us and help us to do everything, right? So when you're doing this course, what will you get and how it's going to help you? So first of all, you're going to get 70 hours of live content where it is going to purely new things, new knowledge, delivering to each and every one of you. It's going to be not any kind of a recorded class. We will be there in person, present with you online, where we'll be talking and teaching you each and everything. You guys can ask us doubt, question, queries at any given time, and we'll be there to help you out. Along with that, when we are conducting our offline workshop, there you are going to get hands-on experience of different material explorations, different machineries, and how to work around it. Along with that, we are going to be doing industrial visits, workshop visits, and having lots of academic resources. Our course that we are doing for 28 days, which is going to be spread across 6 weeks, going to be end with and course exhibition, where we'll have awards. We are going to call professionals from outside, which who can give you inputs. Also, another biggest perk I feel of this class that is there, that we offer doubt solving classes. जब तक आप हमारे साथ हो for the 28 days or 6 weeks,
you'll be able to ask questions. But then, whether you're opting a job or you're practicing this in your some interior architecture projects, you may have questions, you may have queries. So we'll be there to assist those questions and queries as well. Even after the course is done, we are going to have doubt solving session where we all can come together as a community and discuss whatever new ideas that you want to create or helps that you want to have. So Right? this is one of the best part of course. ये हम यू क्यों बता रहे कि being very direct, we all are architects and we know what our work is, or after once we become an architect, in the end life becomes a little mundane with the same things. So what we offer is something new and exciting, because at the end of the day you need something exciting to work with. तो हमने एक कम्युनिटी क्रिएट किया है, एंड वंस यू टेक दिस कोर्स यू विल बी एलिजिबल टू बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी विद द सॉफ्टवेयर एंड नॉलेज यू नीड. And once you're there, every Saturday, we're going to have 1 hour, which we already have right now. Every Saturday, we have 1 hour of class where we'll have just a simple problem statement, yeah, could be challenging thing. And then all of us will take it as a challenge and create something. So it doesn't have to be based for a client or something. It is just for the creative need or the creative instinct that we all have being a designer. एंड ग्रास हॉपर हम जो दिखा रहे हैं, जो आपको सॉफ्टवेयर के स्क्रीनशॉट दिखाए, दे आर ऑल जस्ट बेसिक फॉर्म्स और इटरेशंस ऑफ व्हाट इज पॉसिबल. But when you get in the real possibilities of Grasshopper, trust me, there's this movie called as Lucy, where you use 100% of your brain, right? So Grasshopper is like that software where you can use 100% of design possibilities. There is nothing that is impossible on Grasshopper. आपको अगर उसमें आर्डिनो कनेक्ट करना है, आपको सेंसर्स लगाने हैं, आपको 6 एक्सिस रोबोटिक आर्म कंट्रोल करना है, सब कुछ कर सकते हो, और ये सभी हमने किया हुआ है, इसलिए हम बता रहे विद एन एग्जांपल. तो इट्स जस्ट एन इनफाइनाइट वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड there's a joy. I'm not going to give you any other prospect. There's a joy in learning the software, using the software, and implementing the use cases of software. So let's have be a part of a community. Whoever is interested, course तो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, and will be done. But then we'll find a lifelong connections with like-minded people, and who are all in the same field and same ecosystem of wanting to create something meaningful, something that is exciting, and something that gives you joy. Yes, ma'am, we can continue. So yeah, we can start with our demo class. I will just quickly show. I wouldn't spend much Yeah, time yeah, in sure, sure. showing the script. Rahul, you can mute yourself. Yes, I'll mute you. Is my screen visible, ma'am? No, no, your screen is not visible. Okay, I think you can continue with the course. Once I'm able to load the script, then I'll continue with it. Okay. So meanwhile, I'll show you what one can be creating and all of it. So parametric design. Of course, you would have seen this title, and that is why you're connecting. If I go by the theory, it is as simple as parametric design talks about the different parameters to define a form and creating something unique of its own. It sounds very vague, number one, and it sounds very confusing at the same time. So I'm going to give you an example. Let's say, as a part of an exhibition, you are trying to create a pavilion, right? And when you are creating a pavilion, uh, you want to define certain curvatures, you want to have certain length, you want to, and an area is defined to you. But in that case, 10 meters by 6 meters by 7 meter का volume is given to you. They are like कि आपको यहाँ create करना है. कल को the main designer liked your design so much, he's like कि no, now आप सिर्फ इतने वॉल्यूम में मत कीजिए, आप पूरे वॉल्यूम में इसको स्प्रेड कर दीजिए. सो वहां पर आपका जो पूरा प्रोसेस आपने किया होगा, फर्स्ट somebody is appreciating your design and the joy would be something else, but then आपको पूरा अगर बड़ा एरिया मिल रहा है तो आपको वापस सब कुछ रीडिजाइन करना पड़ेगा.
दैट इज लाइक टू मच ऑफ अ टीडियस जॉब। बट वहां पे हमने जब फर्स्ट डिजाइन किया है उसे पैरामेट्रिक डिजाइन की थ्योरी से किया है, where your radius of an arc is defined, where the pattern can define, where everything is defined. You have to just change those defined numbers, and वो जितने भी areas में आपको चाहिए उतने में आप कर सकते हो। It's like you can use certain variable height है, let's say height 7 meter, आपको उससे height 6 meters करनी है, 10 meters करनी है, you have to just change numbers. We can do everything by certain parameters and our design will be ready accordingly. In other words, अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? जैसे हमारे इस्लामिक आर्किटेक्चर है, जस्ट गिविंग अ रिलेटेबल एग्जांपल जो हमें इजीली समझ में आ सके। पैरामेट्रिक डिजाइन भी कह सकते हैं इसको। क्यों? कि हर एक ज्योमेट्री, हर एक एंगल, हर एक कर्वेचर एक डिफरेंट सेट ऑफ नंबर से डिफाइन। मैं एक एंगल चेंज करूंगी और पूरा डिजाइन चेंज हो जाएगा। तो पैरामेट्रिक डिजाइन हम हमारे ट्रेडिशनल मेथड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर ये एक टाइप ऑफ, जब मैं एक डोम कंसिडर कर रही हूँ या फिर इसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक हाइट डिफाइन कर रही हूँ, ये एंगल डिफाइन कर रही हूँ, तो हर एक चीज को मैं डिफाइन करके चेंज कर सकती हूँ। वही चीज को हम आज के प्रोजेक्ट्स में देख पाते हैं, बट उसके एस्थेटिक्स से कंप्लीटली डिफरेंट हो चुके हैं। You might have seen a project like this, where the ceiling is waffle ceiling. This is a project, a cafe in Mumbai, a facade in Hyderabad. It's a simple brick facade where उन लोगों ने सिर्फ एंगल्स चेंज किए हैं, ब्रिक्स को रोटेट किया है, एक ऑन्डुलेटेड सरफेस प्रोवाइड किया है, जो एस्थेटिक्स में काफी अच्छा लगता है। फिर एक बिल्डिंग का फसाड डिजाइन करने के लिए पूरा फॉर्म डिफाइन किया है, कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे। कल को मुझे ऐसा बोलना है कि यहाँ पर दोनों साइड पे 4 4 है, उसकी जगह मुझे 6 6 चाहिए, तो स्क्रैच से डिफाइन करने की जगह आई एम गोइंग जस्ट रीडिफाइन। पार्टीशन वॉल्स क्रिएट करने हैं, कभी मुझे किसी सरफेस से स्कूप करना है, किसी सरफेस को ऑन्डुलेट करना है, या फिर एक ज्योमेट्रिक फसाड क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पर यू कैन सी देयर इज दिस बिल्डिंग इन अहमदाबाद एंड मुंबई रिस्पेक्टिवली, जहां पर उन्होंने टेट्राहेड्रन का मॉडल यूज करके रिपीट किया। बट मुझे अगर ये टेट्राहेड्रन की साइज चेंज करनी हो, छोटी करनी हो, बड़ी करनी हो, तो आई कैन डू दैट। उसका एंगल चेंज करना है, आई कैन डू दैट। ओवर हियर यू कैन सी कि एट द कॉर्नर्स द साइजेस ऑफ दिस ओपनिंग्स आर स्मॉल, और बीच में आते आते वो साइजेस बड़ी हो गई। साइड में, यहाँ पर सेंटर में ओपनिंग की साइजेस छोटी है, सेंटर में साइजेस बड़ी हो गई। तो ये आइटरेशन चेंज करना है, कैसे भी ज्योमेट्री क्रिएट करनी है। यहाँ पर ज्योमेट्री इज मोर लाइक एन ऑक्टागन। कल को मुझे ट्रायंगुलर ज्योमेट्री चाहिए, तभी भी मैं कर सकती हूँ, और साइजेस छोटे बड़े चाहिए तभी मैं कर सकती हूँ। दिस इज अ पेवेलियन डिजाइन इन अ वे, इन अ गार्डन इन मुंबई, जहां पर ये लाइब्रेरी कम सीटिंग एलिमेंट जैसे यूज हो रहा है। तो ये लाइब्रेरी की कितनी हाइट होगी, कितने डिविजन होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, इनको स्टार्टिंग से स्क्रैच से डिजाइन करने से लेके एंड तक डिजाइन करने के साथ पूरा ही प्रोसेस वी कैन ऑटोमेट एंड वी कैन गेट द कटिंग फाइल्स फॉर दिस। दिस इज अ स्कूल इन अहमदाबाद। इट्स अ प्री स्कूल काइंड ऑफ स्कूल। वो डिजाइन करने का कॉन्सेप्ट ही यही था कि जो यंग माइंड्स होते हैं, द यंग टॉडलर्स व्हिच आर देयर, उनके लिए स्ट्रेट एंगल्स देखना मोनोटोनस हो जाता है। द मोर पॉसिबिलिटी, कर्वेचर पॉसिबिलिटीज दे आर गोइंग टू सी, द मोर डेवलपमेंट दे आर गोइंग टू हैपन। बट ये कौन सा कर्वेचर चाहिए, अगेन कैसा कर्वेचर चाहिए, फिर अंदर का स्ट्रक्चर कैसे होगा, मैन्युअली डिफिकल्ट हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेडिशनल मटेरियल्स के साथ उसके साथ काम नहीं कर सकते। ब्रिक ही है यहाँ पे, आप देख रहे कर्व वॉल क्रिएट किया है, वो ब्रिक के साथ ही किया है, बट वो पॉसिबिलिटीज है क्रिएट करने के लिए। आप इंस्टॉलेशन डिजाइन कर रहे हो, चाहे वो मेटल में कर रहे हो, प्लाईवुड में कर रहे हो, कितनी भी स्केल पे कर रहे हो, ये कुछ 8 9 फीट की हाइट पर है, ये कुछ 20 फीट की हाइट पर है। तो दोनों ही केसेस में यू कैन सी कोई भी स्केल हो, पॉसिबिलिटी हमेशा हमारे पास रहती है।
It can be as small as at the scale of a furniture, फसाड के ऊपर हो सकता है, या बड़े से एयरपोर्ट के स्केल में हो सकता है. दिस इज आवर मुंबई एयरपोर्ट, राइट, और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. और आई एम श्योर आप सबने ये फोटोज देखे होंगे, आप कहीं ना कहीं गए होंगे वहां पर. तो भी ये पैरामेट्रिक डिजाइन से क्रिएट किया है. एंड देन ऑन द राइट हैंड साइड स्पेन में ये एक फेमस पेविलियन है जिससे पैरामेट्रिक डिजाइन और वॉपलिंग ऐसा टेक्निक से क्रिएट किया है. I'll just show you an example of this now that you're seeing this image. Can you see this? It's very much like the same. We have made a smaller version of this over here with the same techniques. तो जो टेक्निक्स ये बनाने के लिए यूज हुई है वही टेक्निक्स बड़े स्केल में वो पेविलियन बनाने के लिए यूज होंगे. देयर इज नथिंग डिफरेंस. इट्स जस्ट मटेरियल. यहाँ पे हमने छोटी स्केल में मॉडल बनाया है तो कम यूज हुआ है, वहां पर ज्यादा यूज हुआ है, वहां पे साइज बड़ी है. बट इट्स एग्जैक्टली द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग दिस थिंग, मेकिंग दिस थिंग इज एज सेम एज दैट. तो ऐसा नहीं है कि जो भी चीज बड़ी स्केल में पैरामेट्रिक डिजाइन में पॉसिबल हो सकती है वो छोटी स्केल में नहीं हो सकती. फिर फर्नीचर क्रिएट कर रहे हैं. फर्नीचर में बेंच हो सकता है, टेबल हो सकता है, पार्टीशन हो सकता है, सोफा हो सकता है. इट कैन बी सो मेनी थिंग्स. इसे हम सॉलिड भी बना सकते हैं. जैसे आई कैन सी दैट ये पर्टिकुलर हमने बेंच डिजाइन किया था. एंड बाय द वे दिस इज 3D प्रिंटेड. हमारे पास 3D प्रिंटर्स है और हमने ये टेक्नोलॉजी को यूज करके, सॉफ्टवेयर को यूज करके जो भी फॉर्म चाहिए वी हैव डिसाइडेड दिस. और यही चीज हम ये टेक्निक में बड़ी स्केल में भी बना सकते हैं. Right, so I'm going to show you a few examples from our archives of the previous workshops that we have taken. This on the left are the AI generated images कि AI में क्या चीजें possible. And trust me, when I say AI generated images, हमें कुछ मॉडलिंग नहीं करना है, हमें कुछ क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर पे AI के लिए काम नहीं करना है. ये हम प्योरली आइडिया जनरेशन के लिए, कॉन्सेप्ट जनरेशन के लिए यूज करते हैं. और इससे क्रिएट करने के लिए वी हैव टू जस्ट नो द राइट टेक्निक्स एंड राइट सेट ऑफ वर्ड्स. ये टेक्स्ट से सारी इमेजेस जनरेट की हुई है. while on the right hand side ये पैनल्स है, सीएनसी किया हुआ पैनल्स जिसमें आप चाहे वैसे पैटर्न क्रिएट करवा सकते हैं, चाहे वैसे विजुअल इमेजरीज करवा सकते हैं. ऑन द लेफ्ट देयर आर 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट्स. राइट हैंड साइड पे वॉफलिंग ऑब्जेक्ट्स जैसा हमने एक एग्जांपल देखा वैसे अलग एग्जांपल है. वी हैव दिस वन ओवर हियर विद मी एक्चुअली राइट नाउ. यू कैन सी ये पेविलियन है, एक छोटे से पेविलियन का मॉडल है. तो बड़े स्केल में कैसे बनेगा, कितने एलिमेंट्स यूज करने हैं, कैसी जॉइनरीज होगी, आई कुड फिगर आउट एवरीथिंग फ्रॉम दिस. एंड दिस इज ऑल पार्ट ऑफ आवर वर्कशॉप. ऐसा नहीं हमारे 28 डेज के कोर्स में ही स्टूडेंट्स ने क्रिएट किया. दैट इज मी एंड शान सर विद अनदर स्टूडेंट. On the right hand side ये जो installation है ये completely 3D printed. It's an art installation that is 3D printed. On the left जो है वो paper cutting installation है. ये बीच वाला है वो again waffle model है. And this is from our recent workshop that we have just finished last month. Our students working in our space, assembling and doing things. Yes, so this is the pavilion that we had designed. उसका स्क्रिप्टिंग कैसा था, उसका ओवरऑल प्रोसेस कैसा था, उसके असेंबली के पार्ट्स कैसे थे. दिस वाज आवर एंटायर प्रोसेस लाइक दिस. नॉट जस्ट दैट वी हैड डिजाइन दिस शेयर. इसका स्मॉल just to add a point to what Nidhi ma'am was saying, yes. काफी लोगों के क्वेश्चंस दिमाग में आया रहेगा कि मैंने राइनो ग्रासहोपर कभी यूज नहीं किया है, क्या ये 20 डेज में पॉसिबल है? आप इतना कुछ बता रहे हो एआई राइनो ग्रासहोपर. ये पॉसिबल है क्योंकि ये हमने कुछ नहीं किया इसमें. दिस इज एंटायरली स्टूडेंट्स वर्क and these students did not know Rhino when they started, and at the end of this even we were surprised because we reduced the course span. We were also little skeptical in the beginning कि हम cover कर पाएंगे क्या. In fact we were surprised with the outcome. The outcome was way better than we had expected. So now we are certain that not just it is possible, it's the right amount of time for you to be taking this course. Nidhi ma'am, you can go even to the project of what one of the student had done. Yeah, I'm coming This, to that. this Sure. is one of the installation which was done entirely by students, where every module was individually designed by each student.
and we had assembled into a like a group installation, which gives a very abstract but very soothing sort of feeling. आपको फोटो में शायद it won't justify, but when you see it in real, it's just what do I say? Give me a right word. Mesmerizing. Mesmerizing. It's just mesmerizing to see it in real. अगर आप में से कोई भी अहमदाबाद में हो तो प्लीज कम विजिट कैंपस अमोर इन वस्त्रापुर. आप लोग आके यू कैन सी दिस प्रोडक्ट्स लाइव इन फ्रंट ऑफ यू. एंड देयर वर मेनी ऑफ देम, पर हम लोग क्या करते, 50-80% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर गिव अवे. So these are only group works which we can't split the group work into multiple people. So group works are kept at Amor for other students to get inspired from. बट जो भी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स है, लॉट्स ऑफ देम जो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे बिकॉज दे सरप्राइजेस. लॉट ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स विच विल बी गिवन अवे टू यू एज अ गिफ्ट. 3D prints, laser cuts, CNC models, all of them. I'll just come, take, make, take away. And can we go to the third one? Yeah, Yeah, yeah. so this is a story I'd like to illustrate of Alicia. She is one of our student. Uh, yeah, Nidhi, can you share Instagram's handle in the WhatsApp Yeah, yeah, I'll just do that. chat? Yeah, yeah, sure. So this is a student of a, this is one of the story of a student, Alicia. Just like all of you guys, she had never used Rhino, never used Grasshopper. She designed this sofa, which is very futuristic and looks very aesthetic as well, entirely from scratch. इन्होंने ये डिजाइन किया था. फिर उसके रेंडर्स निकाले थे. तो बॉटम में द थ्री images you see are taken renders using AI, and then she had made a small prototype of the sample. And because she was very active with all the submissions and assignments throughout the course, so we had to give her the best student award. So we have a lot of awards and a lot of things which we do in the process. Yes, Nidhi ma'am, you can continue with. Yes, I'll just share after this presentation the link to it. But if you want to take the demo, if your screen is working, we can first have the demo. Okay, just give me a minute. I'll share the screen. Yeah, So we'll have a 15 मिनट बाद. you're on mute, sir. I mute myself instead of muting the person. ठीक है. So I'll be sharing the screen of a way the software works. The right side में अपना Rhino है, left side में Grasshopper है. Grasshopper works like an extension in Rhino, and Grasshopper itself has thousands of extensions for every kind of need and possibility. तो जैसे कि ये हमने right side में एक form देखा है. Let me preview the form so you can see it clearly. तो whatever form is created, ये एक simple script है. इसको बस केवल 5 या 10 मिनट लगेंगे बनाने के लिए. पर एक बार ये हमारा स्क्रिप्ट बन जाता है, फिर इसको बस मुझे इसके जो भी फॉर्म्स है यहाँ पे डिफाइन करने हैं. इसका क्या रेडियस होगा, इसमें कितने सारे स्टेप्स देने हैं इटरेशन के लिए, इसका कितना हाइट होगा एवरी स्टेप का, और लेट्स से इसका टर्निंग एंगल कितना होगा डिफाइन करना है हमें. एंड सबसे बेस्ट पार्ट, इसका क्या प्रोफाइल होगा. तो ये यूजिंग अ ग्राफ मैपर, यूजिंग making it so easy and intuitive is I don't believe is possible in any other software. आप सोचोगे ठीक है अभी इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये वेस तो बना दिया. नॉट जस्ट दैट यू कैन डिजाइन वेसेस, बट लेट्स से आपको कल अगर कोई भी फॉर्म बड़े स्केल में बनाना है, जैसे कि यू वुड हैव सीन दिस बिल्डिंग. आई वुड लाइक people from the group to put up messages in the chat box identifying the building. So let's say we have this one building. तो ये बिल्डिंग का प्रोफाइल जो बना है, कल समझो क्लाइंट आके बोलता है सर हमारे को ये 10 फ्लोर में नहीं चाहिए और 16 फ्लोर में नहीं चाहिए, हमको 18 फ्लोर चाहिए. 16 नंबर वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं होता है, हमें 18 फ्लोर चाहिए वास्तु के हिसाब से. तो चलो 18 डालना है. द मोमेंट आई चेंज द स्लाइडर द फॉर्म इज चेंज्ड. कल आके क्लाइंट बोलता है सर ये फॉर्म ऊपर का सही नहीं लग रहा है, आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा स्मूथ और लीनियर बनाइए. तो लेट्स से हमें इसमें बस हमारे ग्राफ को डिफाइन करना है, और एक ग्राफ को जैसे हम डिफाइन करेंगे
अपना फॉर्म चेंज होगा। Yes, Juhi, you can please write the question in the chat box. I'll quickly finish the demo in next 5 minutes. So जैसे हम फॉर्म यहाँ पे डिफाइन करते हैं, the automatically design will change, take its form, and not just the design is changing like a basic form, इसके जो भी parameters है are getting reorganized to a new form. So I'll not go much deeper into the working and this thing, but this is just to give you just an idea of how the software works and the lot of applications. Nidhi ma'am, do we still have that image of this building in our presentation? Uh, I think not. Let me just check. But I can show that building ka image. So Just we a have second. just 2 more minutes and then we'll start with the questions. I know everybody has a lot of curiosity and questions. Meanwhile, Juhi, please feel free to use the chat box. And Nidhi ma'am, you can continue with the presentation. I can find that image for you. Yeah. But I think we should take questions first in this, and then we'll come back to our presentation. Everybody, you can turn on your mics. We have Adarsh, OnePlus, Juhi, Bhavati, Ashok, Bhavesh, Himanshu, Swapnil, Madhu, Gayatri, Vaseem, Siddharth, Aman. So lots of people. Yes, Juhi, tell me. Yeah, hi. So Hi, my question is like, for example, the Zaha Hadid buildings. I'm an architect, so like, let's say Zaha Hadid buildings. Okay. So for example, if I'm drawing a concept on my sketch sheet, then I want to convert it into a 3D modeling. So like rhinoceros and rhino and grasshopper, are these the only medium to convert it into 3D, or it is like developing the concept? So, I mean, I'm more curious, for example, when, let's say, I'm sorry, let me complete. For example, like we use AutoCAD to draw few layouts, right? And then we use a 3D software to convert it into a 3D. So Grasshopper or Rhino, like these softwares will help us only to develop the 3Ds, or we can also create the concepts like in BIM. okay, I'll answer this step by step. Yeah. The reason we use AI is whenever you have an idea or you have a thought process, you can visualize your thoughts easier using AI and create multiple iterations in terms of ideas. A. Once you have ideas, you have to know how to create those forms. Most of the softwares we have, like SketchUp and Revit, they are very constrictive in terms of form exploration. So you get constrained specifically, and when you have designs which are a little out of box, little creative, it gets challenging. So that is where Rhino helps you to derive your forms in a better form, where with multiple angles and multiple shapes and geometry with curvilinear forms. Second you have is Grasshopper. Grasshopper is a very logical based designing, जिसमें आपका वन प्लस सी पी एच आई एम म्यूटिंग यू सॉरी ग्रासहोपर इज अ वेरी इंट्यूटिव सॉफ्टवेयर जिसमें आपको लॉजिकली डिजाइन डिफाइन करना है। एक बार आपने आपको लॉजिकली एक बार आपने डिजाइन डिफाइन किया तो यू कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ इटरेशंस। जैसे just I showed you how a single curve can change the form of the building. That's how, not how, all the designs of Zaha Hadid are designed by Grasshopper. So I had attended several talks of Peter Smosher, the main design head of Zaha Hadid, and he showed how his process of designing was using Grasshopper and defining forms and shapes. And then we do form exploration with 3D printing कि आप जब form देखो you can visualize it in your hands, see it how the form comes, and 3D printing has just many other applications which will not even enter. It is like a aesthetic to designers where जो भी आपके ideas है बस दिमाग में नहीं है, आपको वो बिल्डिंग बने तक रुकना नहीं है। आप डिजाइंस बीइंग एन आर्किटेक्ट बीइंग हैविंग अ मॉडलिंग स्क्रिप्ट ऑन द स्पॉट ऑफ मॉडल करो, आधे एक घंटे में प्रिंट करो, प्रिंट करके उसको हाथ में फील करो, एंड इट इज़ वेरी इजी, देयर इज नो रॉकेट साइंस। आपको बस वो इजी कैसे है आप जब करोगे तब समझेगा, नहीं तो आपके दिमाग में इट विल सीम लाइक इट्स समथिंग आउट ऑफ बॉक्स। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट देन आई थिंक एवरी आर्किटेक्ट डिजाइनर शुड हैव द एक्सेस ऑफ ऑल दिस टूल्स।
having AI, Grasshopper, Rhino, and 3D printing. They're just must have in today's day. I think Nidhi we can quickly So we have one close more the question. presentation. Okay. I think we have 3 slides more and then we can. Yeah, So how we do we have make things happen in real through which materials? Also, how do we plan modeling after? So that is our course. That is all our course about. अगर हम ये अभी बता दे तो अभी आपको कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं लगेगी. In the course we'll explore all the materials, form exploration, कैसे real practical world के issues आते हैं, कैसे assembling के issues आते हैं. And जब आप ये सभी चीजें hands on करते हो, हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल नहीं है जब 4 वीडियोस देख के आप सॉफ्टवेयर समझ लो. आपको जो भी रियल सोल्यूशन, रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और हैंड्स ऑन रहेगा. हमें बस ऐसे आपको ऊपर ऊपर से सिखा के जाना नहीं है भाग के, हमें आपको हैंड्स ऑन दिखाना है कि आप एक्चुअली कर सको. Nidhi ma'am, you can go back to the presentation. I think we'll continue sure, with the. sure, sure. All right, I'll just. So बाकी काफी लोगों ने अभी तक पूछा नहीं क्वेश्चन. आई एम सरप्राइज, बट डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा कि ये कोर्स करने के बाद हमें जॉब्स में कुछ हेल्प होगा, जॉब्स मिलेगी कि नहीं, या फिर हम ट्राई करते हैं वैसा हम आउटपुट क्रिएट कर पाएंगे. जस्ट अ सेकंड. Okay. So, the statistics I would say speaks for themselves. जॉब करनी है आपको, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑफ कोर्स ग्रेट टू डू अ प्रैक्टिस, बट इफ यू आर समवन जिसको जॉब भी करना है या ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनको अगर अपना फील्ड लिटिल बिट और एडवांस करना है या फिर कुछ और नई चीजें एक्सप्लोर करनी है जॉब्स में, तो आफ्टर डूइंग दिस कोर्स you have the right skills to qualify yourself as a computational designer, and there are plenty of jobs available nationally and internationally for this particular role. Not just that, what salary or what remuneration you get at this point, you will be definitely be able to see at least 45 to 50% of the hike. A fresher with computational design experience will have certain height, and also if you are intermediate professional who has been working in the job कुछ सालों से, उसके बाद अगर आप वो चीज को सीख के कहीं और अप्लाई करते हो, you'll definitely see कि आपकी value would be much more. And productivity, क्योंकि हमारे बहुत सारी प्रोसेसेस, इटरेटिव प्रोसेसेस इजी हो जाएगी, हमारी एफिशिएंसी काम करने की, चीजें ऑटोमेटेड करने की काफी बढ़ जाएगी. तो जो काम आप 1 घंटे में कर सकते हो, वो आई वुड से 40-45 मिनट्स में आप खत्म कर सकते हो विथ बेटर आउटकम्स. एंड these are the possible job openings that we have, right? You can, these are few posters that we have compiled, but there are much more job openings available all throughout this thing, starting from Fosters and Partners internationally to firms in Ahmedabad, Mumbai, and Delhi. Right? So We'll not talk much about this. You research on your own and just Google job opportunities and you'll see plenty of options. So coming back to the main question, which nobody has asked surprisingly, fees kitna hoga? Any guesses of how the fees should be or how the fees are? Needhi ma'am, you can. Shreyan sir, they already are aware of the fees actually because, Okay. yeah, that's why nobody is all right asking. then. Go ahead. Okay. Needhi ma'am, can you show the slide of the comparison of fees? Sorry? There's a fee comparison slide. Oh yes. Sure. So this is how a fee compares to all the other courses and what we are offering. Right now we are currently very modest with our fee structure, and all that we are teaching is way more. It's equally qualified to best of the masters, I'd say, because personally I've been through one. Coming back to the questions, few of the questions which students have asked, I'll quickly repeat them.
किसी ने पूछा था, can we connect if we have a problem at site afterwards? Exactly, as we mentioned in the presentation, every Saturday we will be having a doubt session class. And specifically, we realize that you guys need this because many times when you work on the site, there will be a lot of issues and challenges. So every Saturday, 1 hour will be given to all the students who have doubts, but you'll have to pre-assign or pre-ask us to schedule a time. So everybody gets even amount of time. किसी ने और क्वेश्चन पूछा था कि will the recordings be given? Of course, all the recordings will be shared to you, to your email ID, and you will have the access for them as long as you wish to. But we would prefer not to refer or be not to rely on the recordings. आप लाइव आइए, नहीं तो क्या होता है, एक प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है, इट्स ह्यूमन नेचर कि रिकॉर्डिंग है हम बाद में देख लेंगे. वी वुड नॉट एडवाइस एनीबडी टू बी बेस्ड. लाइव होता है तो ऑटोमेटिकली अंदर से जील आता है कि लाइव कोई तो आदमी है सामने, हमको सुबह उठ के बैठना है क्लास में. एंड दिस, and if anybody wants to ask the timeline, then we have the classes in the morning and evening. We have two batches in the coming batch. Morning batch will be from 8 to 10. Evening batch will be from 6:30 to 8:30. As most of us are professionals or practicing architects, whichever is right for you, you can opt for them. And for specifically students who want to apply for masters, this is the best kind of timing where you can do all the master related work, also upscale your portfolio with all the content you get from the course. One more question that was asked is जितने भी मॉडल करते हैं उसका स्ट्रक्चर डिजाइन भी होगा. So Grasshopper gives us certain level of BIM designing, but afterwards, once the form is designed, you can always take all the parameters and directly create a cutting file. So it is even one layer ahead of Beam. Beam is just giving an information of how the building should be. This is directly giving us an output which gives you the generation. So आपको there's nothing in between. Your software itself gives you the cutting file and the generation file. जितने भी मॉडल करते हैं, sorry, without AI using can we render in Rhino. Rhino gives you a basic render. AI makes it realistic. AI जैसे आपने इंटरनेट में, I'm sure I don't want to go more, आपने इंटरनेट में या इंस्टाग्राम रील्स में देखे रहेंगे. तो AI is just a different thing altogether, but you need to channelize how you use it. Otherwise, it's useless. Okay. Quick I question. have one more question. I have one more question. Grasshopper and Rhino, do we have to use both of them together? Or is this like, yeah. So Rhino is used standalone. Grasshopper is used as a plugin. To use Grasshopper, you need Rhino. But Rhino, just for a modeling, you can use Rhino just like that. Okay, thanks. Or quickly to ask you a little technical side of Rhino, we have a different sort of modeling softwares. जैसे कि we have NURBS based, mesh based, subd based. जैसे Blender हो गया, SketchUp हो गया, Revit हो गया. Rhino is the only software in the world which combines all these forms in one software. आप एक ही मॉडल स्पेस में NURBS सॉफ्टवेयर, सबडी मॉडल और ऑल्सो mesh तीनों को कंबाइन करके सिंगल फॉर्म बना सकते हो. And all of them have their individual pros and cons. So you use all of them to whatever create free design. When is the next batch starting? Next batch, the weekend batch is already started. I mean, the registrations have started. So weekend batch will be starting in the coming week. And the next batch, Nidhi ma'am, can you just check the dates for me? Just hold on. So the coming batch will be starting. We have a current batch which is rolling right now. The coming batch will start in next 20 days. So this is the right time for you to decide whether it's the morning batch or the evening batch. आपको जो भी convenient लगे. So yeah, so the evening batch is starting from 1st August. And अगर आपको morning batch चाहिए, तो we are starting the morning batch from 2nd September. And also to add to what sir was just saying about different kind of modeling, I'm sure आप लोगों ने Maya as a software सुना होगा, right? कि Maya में modeling होता है. Lots of animators, jewelry designers Maya में करते हैं sorry modeling. So वो modeling Maya में इसीलिए करते हैं because कोई एनिमेशन में कैरेक्टर बनाना है, डिजाइन करना है, तो उसके सर्टेन कर्वेचर्स होते हैं जो आप किसी और सरफेस बेस्ड सॉफ्टवेयर में जैसे स्केचअप है उसमें नहीं कर सकते. उसमें सर्टेन 3Dनेस चाहिए
और उसको कर्वेचर अटेंड करने के लिए चाहिए, और वही काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो माया है, वही सॉफ्टवेयर का जो पार्ट है एज ए सब डिविजन, वो राइनो में अवेलेबल है, which is like one and only software which allows you to do that. No other software can help you do that. So it's like Rhino is a one whole software which goes and do the work for you. ठीक है. So we had a lot of monologue and a lot of new things which are told. It's a little technical here and there. I'll tell you just one lasting word before we end the meeting. Uh, at the end of the course, it's not the software that you learn, it's not the skills that you acquire, it's the people you connect with, it's the like-minded people in the community you create, and the connections you establish. And also those will help you and us in the longer run in our work we do. So आपको अगर आगे इंटरेस्ट है कोर्स लेने के लिए तो प्लीज़ गेट इन टच विद रिद्धि मैम एंड क्लारा मैम, जिन्होंने आपको, they would have communicated with you before the Zoom call, with sending the Zoom. You can get in touch with them. Vidya ma'am, would you like to add with the procedure of joining? Sir, it is also some of them must have connected through Halak or even Shaili and Kiran. So they will, these all students will be getting a message from us, and if they're interested, they can, we can take it further from there. Okay. Sure, great. ठीक है. Any last questions before we wind up? We'll see you directly with the questions in the course. Okay. Thank you. Thank you all for spending your time with us on Sunday morning. Have a great day. Have a great weekend. Yes, Riddhi ma'am. All right, everyone. We'll call it a day. Thank you. Thank you.